Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is episode 124 in this beautiful series जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करते हैं in 7 step process way where the 7 step is like price, pattern, volume, momentum, volatility, time and sentiment. इन सातों चीजों को हम लोग टॉप डाउन अप्रोच में इंसर्ट करते हैं, यानी कि हम लोग मंथली, वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं फ्रॉम अ स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, where monthly chart depicts long-term trend, weekly chart depicts medium-term trend, and daily chart depicts short-term trend. उस वे में हम लोग ओवरऑल एनालिसिस करते हैं फॉर द ओवरऑल मार्केट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो मेजर इंडाइसेस हैं दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं एंड ओवरऑल मार्केट का क्या टोन चल रहा है, कौन से सेक्टर्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कौन से स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए. दैट्स व्हाट वी यूजुअली डिस्कस इन वीकली मास्टरमाइंड. एंड अगर आप बिल्कुल न्यू हो फॉर द टेक्निकल एनालिसिस जर्नी, देयर इज अ ब्यूटीफुल सीरीज व्हिच वी हैव ऑलरेडी posted on our YouTube channel called as Basics of Technical Analysis. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है. मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सीरीज आपको सारा 7 स्टेप प्रोसेस इजीली समझ में आ जाएगा. Plus, you will also be able to understand few other topics like moving average, Fibonacci, gaps. Then we have supports and resistances and few more topics, जिससे आपका टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड यू विल नॉट नीड एनी काइंड ऑफ paid program in order to understand the basics of what technical analysis is all about. So I hope that you're going to take maximum benefit of that series. Right, so let's quickly have a look at weekly mastermind for this week so that we can understand कि overall मंथ में अब तक क्या हुआ है पिछले 2 से 3 हफ्तों में. राइट, सो वीकली मास्टरमाइंड फॉर 20th of July 2025, जहां पे एजेंडा इज गोइंग टू बी सिमिलर. पहले हम मार्केट इंडेक्स देखेंगे, देन वील हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड लास्ट में हम लोग अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखेंगे. तो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी डाउन बाय 0.72, सेंसेक्स डाउन बाय 0.90, बैंक निफ्टी डाउन बाय 0.83, मिड कैप अप बाय 0.98, इंडिया विक्स डाउन बाय 3.63 एंड यूएसडी आईएनआर अप बाय 0.39. ओवरऑल देखा जाए तो लाइक काइंड ऑफ मीडियोकर मूवमेंट है, इतनी कुछ खास नेगेटिव साइड में मूवमेंट नहीं है. नॉट अ ह्यूज साइन ऑफ कंसर्न प्रोवाइडेड यहाँ से और कंफर्मेशन मिलते हैं तो. राइट, देन वी हैव निफ्टी 50 मंथली अबाउट 60, वीकली 60 को तोड़ चुका है एंड डेली अराउंड 43 है. थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड्स का मुंह खुल चुका है और प्राइस एक्शन जो है मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी ले चुकी है. सो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से निफ्टी 50 इधर इट विल टर्न इनटू अ साइडवेज जोन बिकॉज ऑलरेडी वो ऑल टाइम हाई जोन के आसपास ही है, or else it can break down of RSI 40 and for the shorter period of time it can go below 40 and we can get shorting opportunities जहां पे जो Nifty 50 है it will form lower tops and lower bottoms, so we'll have to be prepared for that. Then we have Bank Nifty monthly above 60, weekly around 60 and daily 60 को 2 बार रेजिस्ट कर चुका है एंड यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज बन रहा है बट ज्यादा कुछ साइन ऑफ कंसर्न नहीं है बिकॉज जो बॉटम्स है वो थोड़े सिमिलर है. बट स्टिल अगर यहाँ से और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गए तो पॉसिबिलिटी है दैट यहाँ से हमारा पर्सपेक्टिव जो काफी टाइम से बुलिश था इट कैन गेट टर्न्ड इनटू बेरिश पर्सपेक्टिव एज वेल. देन वी हैव प्राइवेट बैंक्स मंथली अबाउट 60, वीकली 60 को तोड़ चुका है एंड डेली में आरएसआई 40 को तोड़ चुका है विच इज अ बिग साइन ऑफ कंसर्न बिकॉज प्राइवेट बैंक्स वेर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर अमंगस्ट लाइक प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स. सो यहाँ पे आउट ऑफ द बैंड भी जा चुका है ऑन द लोअर साइड विच इज अगेन अ साइन ऑफ कंसर्न. Then we have PSU banks monthly above 60, weekly 60 को तोड़ने पर है, like 60 ब्रेकआउट पर है एंड डेली में जो है इट्स अराउंड 56 57. तो राइट नाउ PSU banks are looking better as compared to private banks, बट यहाँ पे देखा जाए तो कंसोलिडेशन ही है. सो लेट्स सी whether it is going to break out or not. Then we have sector specific movement. अगर देखी जाए तो 3 sectors were on the bearish side except that all the sectors were on the positive note, जहां पे media was the best performing sector up by 3.91 followed by realty 3.84 and so on. एंड जैसे कि मैंने बताया बेरिश साइड में तो 3 ही सेक्टर्स थे. राइट, सो निफ्टी आईटी देखा जाए तो मंथली वीकली बोथ आर साइडवेज और डेली में बेरिश जा रहा है बिकॉज आरएसआई इज बिलो 40, सो दैट्स अ साइन ऑफ कंसर्न ऑन द आईटी सेक्टर. बट मैंने काफी बार ये चीज भी बताई है दैट मार्केट एंड आईटी सेक्टर बोथ आर इनवर्सली कोरिलेटेड बिकॉज जब आईटी सेक्टर नीचे जाता है मार्केट ओवरऑल ऊपर जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सो ऑन जो प्राइमरी सेक्टर्स है. Whereas जब मार्केट नीचे आता है so at that instance of time IT सेक्टर ऊपर जाता है most of the times. So let's see based on this maybe the overall market is about to turn on the positive note itself. Right, then we have Nifty Auto monthly above 60, weekly 40-60 के बीच में है and daily में काफी बार resist कर चुका है. So auto sector is somewhat in a consolidation zone itself because weekly में भी आप देख सकते हो complete tight squeeze बन रहा है in terms of price action. Right, then we have metal sector monthly around 60, weekly 60 को
अभी भी ब्रेकआउट करना बाकी है एंड डेली इज अगेन बिटवीन 40-60. सो एज ऑफ नाउ वी कैन वेट फॉर either breakout or breakdown to happen. Then we have FMCG, monthly, weekly, both are sideways and daily is around 60-61. एंड यहाँ पे जो है बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से वो हायर बॉटम के लिए एस्पायर करें एंड देन वी कैन सी कंटिन्यूएशन ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम ऑन डेली चार्ट, जहां पे अगर वो स्ट्रॉन्ग और रहा, so there's a fair possibility that it can also convert weekly and monthly into an uptrend as well. Then we have energy sector, monthly, weekly, daily, all three time frames between 40-60. एंड यहाँ पे मंथली चार्ट देखा जाए तो मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बना रहा है in terms of bearish candle, but let's hope so that it doesn't get confirmed on the bearish side, because अगर वो confirm कर जाता है, so energy could be the next sector on the shorting side, because वहां पे और ज्यादा confirmation मिलेगा on the bearish note. Then we have pharma sector, monthly above 60, weekly 60 के आसपास, daily also above 60. So pharma is looking like a sweet spot जहां पे काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज बना रहा है एंड अगेन we have certain resistances on the upper side, so there's a possibility that वहां पे वो रुक के थोड़ा सा time ले सकता है in order to give us proper breakouts and go further into an all-time high zone. But the only sign of concern as of now is RSI 60 on weekly chart. अगर वो next week में opening काफी अच्छी देता है, so there's a fair possibility that pharma could be the next best performing sector starting from next week onwards. Then we have infra sector, monthly above 60, weekly around 59-60, and daily is also in consolidation. Again, moving average का थोड़ा सा resistance ले रहा है, so we'll have to wait on this. Either it is going to go into a consolidation zone or else it is going to break down, because यहाँ पे bullish side में तो कोई फिलहाल confirmations नहीं दिख रहे हैं. Then we have realty, monthly around 60, weekly sideways, daily में भी अटक रहा है. So let's see whether it is going to get continued or not. Then we have media, monthly sideways, weekly sideways, daily भी 60 के आसपास है. And again यहाँ पे भी tight range बन रही है, and media is the one which we are already avoiding since last so many months. So again we'll keep continuing to avoid this particular sector. Right, so I hope that you are absolutely clear with this overall market analysis and आपको अच्छे से समझ में आया होगा that with the help of that 7-step process and with the help of top down approach, कौन से सेक्टर्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड हमें किस चीज का वेट करना है, whether we have to wait for proper 60 breakout or 60 breakdown, 40 breakdown in order for to go on the either longer side or on the shorter side based on breakout or breakdown. So I hope that you are absolutely clear with this. And again, जैसे कि मैंने सेक्टर्स का एनालिसिस किया, you have to do your own analysis as well. And जो भी सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, you have to go into like monthly, weekly and daily chart of all the stocks within that particular sector on your own, so that you can understand कि कौन से stocks outperform कर रहे हैं, कौन से stocks breakout पर हैं, कौन से stocks breakdown पर हैं, कौन से stocks supports पे हैं, कौन से stocks resistance पे हैं, so that you can बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर प्लान कि अगर ये होता है तो मैं लॉन्ग साइड ट्रेड लूंगा, अगर ये होता है तो मैं शॉर्ट साइड ट्रेड लूंगा, अगर ये सिचुएशन बनती है तो आई कंप्लीटली अवॉइड एंड सो ऑन. सो मेक श्योर यू आर रेडी विद दैट गेम प्लान एज वेल बिफोर द मार्केट ओपन्स ऑन मंडे. And I'll see you in the next episode of Weekly Mastermind and in next episode of Technical Wednesdays. But in the meantime, if you want to work up on your mindset, make sure you check out our new series that is Moneyflow Mindset, जिसके already 2 episodes live हो चुके हैं. In the first episode, we discussed about goal setting. In second, we discussed about some of the negative limiting money beliefs which a lot of people have. So make sure you check it out so that you can also work upon your money mindset, because trading is not just about technicals or it's not just about strategy and so on. It's also about risk management and money mindset. So make sure you work it out and make sure you check all those series and implement all the actionable points which I have mentioned in that series, and also take proper action. जो भी मैंने अभी बताया है, that you have to analyze all the charts within any of the sectors whichever is performing good. Like we have pharma sector which is performing right now at the verge of good performance, so we can do the analysis of those charts as well, right? So I hope that you will do that home assignment, and if you have any of your doubts, make sure you comment below this particular video. And उसके अलावा अगर आपके कोई takeaways भी हो, make sure you can share all of those takeaways in the comment section itself. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.